Good morning, friends. Welcome to my class English Grammar. Chapter is verb. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, as you all know that what is the Hindi meaning of verbs? क्रियाएं. जो हिंदी मीनिंग होता है वर्ब का, उसका मतलब होता है क्रियाएं. What is the function of verbs? Verb helps in the sentence to complete the sentence. Verb is a word which is an action which is done by the subject. वर्ब एक क्रिया है. क्रिया एक जो है कार्य है. ये कार्य जो है कर्ता के द्वारा किया जाता है, जैसे कि खाना पीना, स्लीपिंग, वॉशिंग, रनिंग, laughing, kicking, like that. These are the words, these all are the examples of verb. There are two kinds of verb, transitive and intransitive verb. So today we learn about the types of verb example, with the help of the example. I shall teach you the definition of the verb, what is verb, types of verb with their examples. So now we start with the verb. As I told you previously, what is the verb in simply way? If you understand, the verb is an action which is done by the subject. क्रिया एक कार्य है जो किस कर्ता के द्वारा किया जाता है. Like already I have given you the example with the help of the few words. I told you laughing, eating, cooking, making, stealing, stuffing. These are the words, these are the examples of verbs. Now, if we go ahead in front of us, now I am going to teach you the kinds of verb. And how does it work, and what is the meaning, and what is the explanation of this verb. So now you look at me in front of your screen. I explain you the types of verb with the help of this diagram. In front of you, you can see I have made this diagram. I have drawn the two arrows. Here is the verbs. It's coming out, and now it is divided into two parts. So it means there are two kind of verb. First is transitive verb. What is transitive verb? I shall explain. Another is intransitive verb. What is intransitive verb? I shall also explain you. Now, first of all, we have to learn what is transitive and how it is different from intransitive. So, transitive verb is a word. Look, it is a word which requires an object. ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. जिसे पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. तो इट इज ए वर्ड विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ. ठीक है. नाउ with the help of the example, I shall tell you. Now we have an example.
of transitive verb. If I write I made, if I write I made, do you think is it a complete word? No. I made, it does not make any sense. Does it make any sense? No. Your answer should be no. Why? Sir, because I made, what is the Hindi of I made? मैं बनाया. What is the meaning? मैं बनाया, what मैं बनाया? It is an incomplete sense. Okay, it does not make any sense. So, to complete this sentence, we need to require an object. And object is completely missing in this sentence. And without having an object, the transitive verb is not complete in itself. It is incomplete. So, to complete the transitive verb, we have to add the object. So, I made. Now, it is required an object. So, what do you put here? I made an appeal. So, what is appeal? An appeal. What is the work of an appeal? So, an appeal, it is working as an object in transitive verb sentence to complete the transitive verb completely. So, in transitive verb, one more time, I need to explain you. In transitive verb, object is must to add. Otherwise, if you do not add the object, the transitive verb is not complete. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है. जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा ट्रांजिटिव वर्ब पूरा नहीं होगा. यू कैन लुक एट हियर. आई मेड और आई हैव रिटन द एग्जाम्पल. व्हाई आई हैव रिटन? टू मेक यू अंडरस्टैंड इन रियल मैनर. तो आई मेड, एंड इफ आई हाइड दिस ऑब्जेक्ट, तो आई मेड. तो अगर ओनली इफ यू राइट आई मेड, तो अगर केवल आप आई मेड लिखो तो ये पूरा नहीं होता. इसको पूरा करने के लिए हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा. तो हमने क्या लगा दिया? एन अपील. अब ये सेंटेंस आप देखिए, आई मेड एन अपील. इसका मतलब क्या हो गया? मैंने एक दरखास्त लगाई, मैंने एक दरखास्त की. अब ये सेंटेंस पूरा है. जब तक एन अपील नहीं लगा था, ये सेंटेंस पूरा नहीं था. तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड के द transitive verb requires an object to complete itself. Okay, so that is called transitive verb. Sorry. And now intransitive verb, you have learned about the transitive verb only. What is about intransitive verb? So now the number of intransitive verb. So what is intransitive verb? So look at here. Intransitive verb, it is very simple. Intransitive verb which does not require any object. Intransitive verb which does not require any object. Okay, which does not require any object. Intransitive verb क्या होता है? जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर करता है, ये अपने आप में पूरा होता है. Some intransitive verb is complete in itself, which does not require any object. ठीक है, कुछ intransitive verb अपने आप में पूरे होते हैं. एग्जाम्पल के रूप में we have an example in front of you on the screen, like Maya sat down. Here you do not need to require any object. देखो, Maya sat down. I have written the sentence. Okay, now I have no need to add any object. Why? Because Maya sat down. This sentence is intransitive, and this sentence, why it is intransitive? Because this sentence is complete in itself. Because this sentence is complete in itself. क्योंकि ये sentence अपने आप में पूरा है. तो one more time, transitive verb which requires an object to complete itself. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है. बिना ऑब्जेक्ट को पूरा होगा नहीं. एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब. इट इज अपोजिट फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब. इन ट्रांजिटिव वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ. फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स आर कंप्लीट इन इटसेल्फ. ओके, तो कुछ
देखो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको पूरा करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में पूरे होते हैं, ठीक है, तो यही दोनों में होता है अंतर। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अदर थिंग्स इन वर्ब। फ्रेंड्स, few people come to you and ask you what is the prime auxiliary verb, what is auxiliary verb. So the student just confused about the auxiliary verb. So you no need to confuse. Why are you confused to take the auxiliary verb and what is the auxiliary verb and what is the working function of the auxiliary verb in a sentence? It is very simple. Look. If few person come to you and ask you कि बेटा tell me what is the auxiliary verb, no need to hesitate, okay? And what is the function of auxiliary verb in a sentence? So you should answer them कि sir auxiliary verb is a helping verb. Auxiliary verb is a helping verb. Helping verb like is, am, are, was, were, do, does, did, had, has, have, okay? Auxiliary verb. Would, should, can, could, may, might, need, dare, ought to. So these are the auxiliary verbs. And it is a helping verb. Auxiliary verb, it is an alternative name. Its alternative name is helping verb. And what is the function of helping verb, or you can say auxiliary verb? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, ओके? एंड द फंक्शन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इज, नाउ द फंक्शन ऑफ द ऑक्सिलरी, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब इज टू हेल्प द मेन वर्ब. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब? First of you have to tell them कि sir auxiliary verb is a helping verb. In Hindi it is a सहायक क्रिया. Auxiliary verb क्या है? सहायक क्रिया है. What is the function of auxiliary verb in a sentence? Sir, the function of the auxiliary verb in a sentence is to help the main verb. जो auxiliary verb का जो कार्य है वाक्य में वो मुख्य क्रिया की सहायता करना है. And what is the difference? What are the difference between मुख्य क्रिया and सहायक क्रिया? तो it is very simple to explain. Look at here. No need to confuse. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखिए. I am eating an apple. So it is a sentence. It is a whole sentence. Now we have to prove the how to auxiliary verb is to help the main verb in a sentence. So look at here. It is a am. Who is am? Am is a helping verb, or you can say that auxiliary verb. It helps the main verb, eating. Eating is a main verb. So am is helping the main verb, eating. Without helping verb, main verb cannot work. Without the helping verb, main verb cannot work. So it is must to having the main helping verb in a sentence. With the help of this, the helping verb, the main verb, it acts. यदि helping verb ये am है, यदि ये ना रहे तो eating की कोई औचित्य नहीं है. It does not exist in a sentence. How to work? He has no idea. It has no idea without having helping verb. यदि helping verb भी ना रहे तो main verb को पता ही नहीं चलेगा कैसे कार्य करना है. तो ये इसको इंडिकेट करता है कि कैसे कार्य करना है, तुम्हारे अंदर क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा. तो यही चीज है. ओके, अब ध्यान दीजिएगा. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है देखिएगा एक बार, ये भी मैं आपको बता दूं. देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होता है जैसे आपका इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव,
ठीक है, ये है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है, जैसे हो गया स्लीप, वॉक, रन, स्वीप, स्विम, स्विंग, तो ये हो गया। देखिए एक ही अंतर है, मेन वर्ब के जो हिंदी में कहा जाए तो जिस वाक्य, जिस क्रिया के अंत, जिस शब्द के अंत में ना लग जाए, खाना पीना रोना धोना, तो वो मुख्य क्रिया हो जाता है, और बाकी जय मार बाज वर ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है। ठीक है, एक चीज और, वन मोर थिंग आई नीड टू एक्सप्लेन यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ somebody asks you कि what is the having verb, having verb, तो you just say कि has, have, had, it is a having verb. Okay, just to make you understand. Somebody asks you कि what is prime auxiliary verb and what is modal auxiliary verb. Look at here, prime auxiliary verb, okay, and what is modal auxiliary verb. Look at it. So prime auxiliary verb is like is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. Only these are the words which come in prime auxiliary verb. But what is a modal auxiliary verb? Can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, need. These are the words which come in modal auxiliary verb. Okay, and I want to tell you one more thing. The second things in both verb, prime auxiliary verb has subject verb agreement. Prime auxiliary verb has subject verb agreement, but modal auxiliary verb has no any agreement with subject. What does it mean? The above things you have understood, but the below things, the second things what I want to understand. देखिए जो है ऊपर वाला, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये तो आपका आएगा प्राइम में। मॉडल में क्या आएगा? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, नीड, देयर, ये मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरी चीज ये है जैसे कि प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, मतलब इन वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है, और जब एग्रीमेंट होता है तो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर वर्ब रहेगा, जहां प्लूरल रहेगा वहां प्लूरल रहेगा। लेकिन मॉडल में ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडल में जहां पे भी प्लूरल या सिंगुलर हो उसके साथ अगर कैन है तो कैन ही लगेगा, माइट है तो माइट ही लगेगा। तो यही आपका वर्ब के बारे में था जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है वीडियो पहले देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट चेक द वीडियो, सी द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्लियरेंस इन माय एक्सप्लेनेशंस इन माय वॉइस, सो you just complain to me. I try to overcome your problem. Okay, so thanks to you to listen to me, and we will focus on our next chapter in our next period. Thank you so much.